Madam, Aparajita madam. Yes, sir. Good Hello, evening. Hello, sir. Aparajita Good madam. evening. Hello. Am I Sound audible, goes sir? like sound as one now. Am I audible, sir? Hello. Sir, am I ତମ audible? ଶୁଭୁନି ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ତମ ସାଉଣ୍ଡ ଏଠି କମେଇ Hello. ଦେଇଛ ଫୁଲ ଅଛି ବା ଶୁଭୁନି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହେଇପାରେ Acha. Sir, am I audible? Swarna Prabha. Am I audible to you? Yes, ma'am. Hello. Swarna Prabha, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. Let's continue. Yes, ma'am. Okay. So today we are going to discuss about your factors in the design of print materials, right? You have to respond. This is your MES-112. The code is MES-112 and we are going to discuss about the block 1, that is factors in the design of print material. Yes, Right? ma'am. Yes. Okay. Okay, let's start with the unit 1, that is theories of learning. Can I ask you one question? मत टिके कहि दियो कि you have already read all the materials, then we will just continue with the question answer session, or I will explain all the concept to you. Yes, ma'am. I have material. ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି। ତମେ ପଢିଛ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଛି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି, so you know Theories about of distance education. तो डिस्टेंस एजुकेशन और आमे आज डिस्कशन करिए कि कौन सब फैक्टर्स रोचे थ्रू व्हिच वी कैन डिजाइन द प्रिंट मटेरियल. ओके, so when I'm talking about learning, so this is not a new concept, I think so. You know, the tentative changes or relatively permanent changes in your behavior is known as learning. So this is not a new concept, and if we go through it, we can see that when I'm talking about learning, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ସେଥିରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି କି we can say that learning by reading print material. When I will talk, when I will say you that what do you mean by learning, you can say me that relatively permanent changes in your behavior, that is called as learning. किंतु जदि आम डिफरेंट टाइप्स पचारे तुम केमती लर्न करूच, तो यू विल से कि देयर आर डिफरेंट सोर्सेस, लाइक यू लर्न फ्रॉम द प्रिंट मटेरियल, यू लर्न फ्रॉम द सेल्फ टीचिंग, और वी कैन से दैट गाइडेड सेल्फ टीचिंग, जमती कि तुम निजे निजे पढ़ुच किंबा काउंसलिंग बाय टीचर्स हो पारे. तो एगेन कहबी कि आउ केमती तुम शिखुच, तुम कहि पारे लर्निंग बाय मीन्स ऑफ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक वर्क यू आर डूइंग. For your giving examination, you are preparing for some assignments or writing some assignments, that's why you are learning.
You also can say that I'm learning for the purpose of communication. I'm learning for the purpose of doing my academic teaching. So there are so many we can say that means, or we can say कि नाई मोर कौन सबू purpose अच्छी, that's why I'm learning. The first आसिबा हमें कोठी के learning and performance. So तमे learn करूचो, how can I know? जदि मु कहबी yes you are learning, तो तमे कौन चीज मते कहबो. So I must have seen some कि नाई there are some changes in your behavior. So we can say that learning सेतेबेले हेई परिबो कि नाई मो परफॉर्मेंस सेतेबेले देखुची कि परफॉर्मेंस आसुची कि तमे जदि किछि लर्न करिछ, इट क्लियरली शोज इन योर परफॉर्मेंस. नाई परफॉर्मेंस अछि तो मु कहबी नाई लर्निंग अछि. तो सेमती आमे कहि परिबो कि लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट जतले कहूचे हमर तमे जानिथबो तीनटा डोमेन अछि, गोटे कॉग्निटिव, गोटे अफेक्टिव, आ गोटे साइकोमोटर डोमेन. तो जतले कॉग्निटिव डेवलपमेंट कथा मु कहबी तो एटा कोन आमे कहूचे चेंजिंग और रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आमे कहि परिबा. तो सिंपल कथा कह करे व्हेन यू हैव द नॉलेज of skill, attitude and values and I will brought together through experience. तो सेटा को मध्ये हमें कोन कहि परिबा कि हमें लर्निंग कोचे फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट. एंड आउट जिंस होउची तमे किछिटा लर्निंग हुएनी किंतु थ्रू मैच्योरेशन किछिटा लर्निंग टाइप रो हमको शो हुए, जेमते कि यू आर नॉट एबल टू वर्क एट द एज ऑफ 6 months, किंतु when you have maturation you are automatically development will be there and you will start work. तो सेही कथा कहै कि लर्निंग एंड मैच्योरेशन रे हमर सेटा को हमें कोन कहि परिबा कि किछिटा जिंस बा किछिटा लर्निंग हमर हुए जोटे कि हमें ताको मैच्योरेशन कहबा किंतु लर्निंग कहबा नाही. सेमती हमर आउट अछि एक्सपीरियंशियल लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविज्म. Experiential learning कौन? The thing or the knowledge that you have acquired through experience. And what is constructivism? When you will apply this knowledge or when you are apply your previous knowledge or previous experience to learn or in the in new situation or to construct some knowledge, that will be constructivism. आमे जोटा कहूचे to the child will construct his own knowledge. तो एटा को हमें कोन कहि परिबे कि नै एक्सपीरियंशियल और एंड हमर कंस्ट्रक्टिविज्म आसे एथरा आसी जिवो. तो सिंपली जदि हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एथरे देखिबा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कोन करछि कि हमें गोटे पिला को कंक्रीट एक्सपीरियंस देले, then on the basis of his observation he will reflect in the new situation. Then हमें कोन करि परिबा कि हमें फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट एंड जनरलाइजेशन ताको करबा. देन आउट तापर कोन करि परबा ना जहा किछ हमें नुआ किछ भी नॉलेज बाहर करले ताको हमें इम्प्लिकेशन करबा. देन आसीबा जेतला हमें कहूचे लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिविज्म को. कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली हमें कोन कहूचे टू कंस्ट्रक्ट योर न्यू नॉलेज. एंड हमें न्यू नॉलेज केमिति कंस्ट्रक्ट करबा? We can construct our new knowledge by applying the previous knowledge in a new situation. किंबा हमें आउ कोन करि परिबा, we will actively participate or constructively participate in the process of getting new information. तो learning हमें ओटा constructivism way रे भी हमें करूचे. ठीक अछि. तो सिंपल जदि हमें देखिबा एठी हमें दुटा थ्योरी विषय आज हमें पढिबा. एक्चुअली तीनटा थ्योरी विषय पढिबा. गोटे बिहेवियरिज्म, गोटे कॉग्निटिविज्म, आ गोटे होची कंस्ट्रक्टिविज्म. एंड बेसिकली जेतेबेला हमें गोटे कोर्स मटेरियल डिजाइन करूचे फॉर डिस्टेंस लर्नर्स, हमें एथरे काहा ऊपर अधिक इंपोर्टेंस देबा ना पिलार एक्सपीरियंस ऊपर इंपोर्टेंस देबा, बिकॉज वी आर डेवलप सच टाइप ऑफ मटेरियल्स फॉर द एडल्ट लर्नर्स. एंड जेहेतु हमें एडल्ट लर्नर्स को पई हमें कोर्स मटेरियल डेवलप करूचे, so we need to embrace the complexity of the design of process, because there will be a lot of difficulties you will face, and first we need to embrace that complexity. Then we need to provide for social negotiation as it is the integral part of designing, and then we need to nurture flexibility and emphasis on learner centered design. Then आसीबा किछटा जिंस जोडा हम कहै the basic conditions of learning. What are the basic conditions when I'm talking about learning? So there must be a basic condition for learning, and first one is contiguity. What is contiguity? It says that on the basis of conditions of learning is contiguity, we can say that the stimulus response the stimulus
and the response relationship, where the response needs to be connect with the stimulus, or we can say that there should be a relation or connection between stimulus and response. So it must be in a continuous process. Then we say that the basic condition is needed, that is practice. ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଚୁଏସନ ଥିବ କିମ୍ବା ନୂଆ stimulus ଆସିଥିବ, so that in that case we need to do practice. ଆମେ practice କଣ କରିବା कि ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ strong bond create କରିବାକୁ ପଡିବ between the stimulus and the response. then ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ next condition କଣ ଦରକାର ନା reinforcement. ଏଇ concept ବି ଆମର ଆଗରୁ ଆମେ ପଢି ସାରିଛେ. You must know about reinforcement. When I'm talking about learning, so if learning happen, or if a student is continuously construct his knowledge or achieve a new goal, at that time we need to give them reinforcement. That may be positive or negative. About positive and negative reinforcement we will discuss it later. Then next condition is feedback. Okay, we can say reinforcement is also included in your feedback. Suppose you are doing something or you are constructing your knowledge. In that process, if you are gaining or you are succeeding or you are going to fail, you are proceed towards failure, in both the cases you are doing the right thing or wrong thing, we need to give you the feedback. Feedback may be in a complimentary way or in a comment way. It can be positive and negative both. So that first I say that reinforcement is also included in your feedback system. Then that another one is, what is the basic condition, that is generalization and discrimination. What is generalization? We can say that both generalization and discrimination is also a condition for learning. When generalization happens, we try to generalize when we discover or we construct a new knowledge, we try to generalize it with other phenomena. When we discover some knowledge, we try to discriminate it from other phenomena. For example, we can say a child can generalize a ball, that all these type of ball, different shape of ball are coming under ball. Then he can also discriminate that is a red ball or that is a blue ball. Then coming to next, that is approaches to learning. When I'm talking about approaches to learning, there are two types of approaches. One is deep and another one is surface. Okay, what is deep learning? In deep learning, we will go through the deep meaning of some phenomena, or we can say that when you have exam, suppose you are going to give a lecture or you are going to attend a examination or any written examination or viva, you will go through the material thoroughly. You will read out the notes in detail. But in surface learning, what will happen? You will just go through the points, like you are reading your newspaper daily, but you are not going to read it deeply. But when you are going to read your learning material or your books, you will read it deeply. So basic difference between the deep learning and surface learning, one is what you will mastery over one subject when you will do the deep learning. When you are going to do the surface learning, you will just acquire the knowledge that is these are the things, I just need to know it. That's it. This is called what? This is called approaches to learning. One is deep, another one is surface. Then come to theories of learning, and we will, when I'm talking about theories of learning, basically there are two types of theory which are gaining popularity among the learners. One is behaviorism, another one is cognitivism. When I'm talking about behaviorism, you must know that behaviorism is a theory of learning where we give emphasis between the
stimulus between the stimulus and response. जेमती कि तुम मान जदि behaviorism रो theories जानी थिबो, you must know about the theory of Pavlov, that is classical conditioning, the theory of Thorndike, that is trial and error learning theory, and theory of Skinner, that is operant conditioning. So Skinner, Thorndike, Pavlov, all those are coming under the behavioristic learning theories. Okay. When I'm talking about Thorndike, you must know about there are three main laws he has given. One is law of practice, a law of readiness, and one is law of effect. So basically, what says it when I'm talking about law of effect? So law of effect says that the end point must be a pleasurable one. ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଜଏନ୍ କରୁଛ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ that experiment when the cat successfully came out of that particular I can say box or something like this. So immediately he given that particular cat is given fish. So that particular cat when he got the fish, that fish is known as the reinforcement. So that say that the saying that हम जेतेबेले मु कहूची कि नाइ आमे ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी कथा कहूचे, ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी लॉ ऑफ इफेक्ट इंपोर्टेंट एथि पई जेतेबेले तमे गोटे नुवा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करि दोछ किंबा तमे जेतेबेले किछि नॉलेज गेन करूछ किंबा तमे जेतेबेले गोटे एंड पॉइंट रे पहुंचुछ तो सेतेबेले तुमको गोटे सैटिस्फाइंग रिजल्ट मोस्ट दरकार पड़िबो नाइ कि नॉट प्लेजरेबल एक्सपीरियंस. ओके. तो सेति आमे कोन कहले कि नाइ आमे लॉ ऑफ इफेक्ट ऊपर अधिक इंपोर्टेंस दोले कि हमको रीइंफोर्समेंट दरकार जोटे कि बीएफ स्किनर मध्ये अधिक इंपोर्टेंस देथिले जोटे कि आगु को डिस्कशन करबे. तो यदि यार एजुकेशन इम्प्लिकेशन देखिबा तो बेसिकली आमे कोन करछे जेमति कि मु कहली कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देबा एंड मिनिमम डिले करिबा रीइंफोर्समेंट देबारे. आउ गोटे जेतेबेले एगुड़ाक जमती कि तुम जानिथिबो कि जेतेबेले कैट कोन कला एटी सेटी फर्स्ट स्क्रैच कला तो आमे कोन करिया जेते भी टास्क थिबो ताको स्मॉल स्टेप रे ताको आमे डिवाइड करिबा. तो जेतेबेले सेमती जेतेबेले आमे जेतेबेले लर्निंग मटेरियल डिजाइन करिबा को जाउचे तो आमे ट्राई करिबा जेतेबेले गोटे स्टूडेंट फर्स्ट किछटा लर्न करि सरला बा गोटे स्टेप बा गोटे यूनिट बा गोटे पर्टिकुलर कांसेप्ट से पढ़ी परला, वी विल ट्राई टू गिव हिम पॉजिटिव reinforcement immediately. Okay. एटा गोटे आमे करि परिबा. देन से कहउछंती कोन आमे थंडाई के परे का पाखु जिबा स्किनर के पाखु जिबा. स्किनर कर ऑपरेंट कंडीशनिंग विषय भी जानथिबो. से पिजन और रैट ऊपर तांकर एक्सपेरिमेंट करथिले जेतेबेले रैट ठीक रास्तार बा पिजन जेतेबेले रेड बॉल बा जेतेबेले से ताको तार एक्सपेरिमेंट सक्सेस करथला बा जेतेबेले रेड बॉल उठोथला ताको से फूड पाउथला. जेतेबेले जेमती रैट जदी ठीक रास्ता रे जाउथला ताको सेतेबेले खाद्य बा फूड मिलुथला. तो से कथा कहूचे कि जेतेबेले ऑपरेंट कंडीशनिंग रे आमे कोन करि परिबा स्किनर कोन कहउछंती कि अगेन रीइंफोर्समेंट ऊपर अधिक एम्फासिस देछंती. तो जदि आमे गोटे गोटे पिलार बिहेवियर बा जदि जोटे से पढुचे ताको आमे स्ट्रेंथनिंग करिबा पई चाहूचे वी मस्ट गिव देम व्हाट रीइंफोर्समेंट. सो जोटा कि स्किनर भी जोटा कि थॉर्नडाइक इंपोर्टेंस देथिले इवन इफ यू हैव द क्वेश्चन हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज थॉर्नडाइक. जदि केबे भी तमर जदि नेक्स्ट एग्जाम दियो सेतर भी आसे तो रीइंफोर्समेंट फर्स्ट थॉर्नडाइक इंट्रोड्यूस करथिले. स्किनर बाद में ताको भी अधिक एम्फासिस जदि के देथिले से होछंती स्किनर. तो सेमती जदि आमे किछि भी पॉजिटिव रिवार्ड यूज करछे इवन क्लासरूम रे भी जदि तमे जदि देखिथिबो टीचर जदि तमे भलो आंसर दोउछो किंबा जदि भलसे स्टूडेंट कोन कला आंसर देला किंबा किछोटे ठीक जिनस कर देला तो टीचर कोन करंती स्माइल करंती जोटे कि आमे कहूचे नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट. स्माइल करबे किछि जदि आमे प्राइज देले ताको प्रेज करले किछि भी तमे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे परिबो. सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कोन वी ट्राई टू रिमूव इट. सपोज जने गोटे पिला रॉन्ग आंसर देला किंबा किछि अनडिजायरेबल बिहेवियर देखेला तो
तो गोटे पिला को जोठी आमे चॉकलेट दोचे ताको प्रेस करछे ताको स्माइल करछे से स्माइल आउ आमे करबानी आमे से ताको अवॉइड करबा से चॉकलेट देबानी कि किछि प्रेस किछि ना वार्डिंग आमे जेंति गुड वेरी गुड सेमति किछि कहबा नै सेथि पई आउ गोटे जिंस भी गोटे कांसेप्ट मन रखिबो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इज देयर but negative reinforcement is not equal to punishment is totally different okay तो यार एजुकेशनल इम्प्लिकेशन रो हमें कौन लिख परिबा कि जेतेबेले हमें स्किनर कर कोन कंडीशन सॉरी स्किनर कर ऑपरेंट कंडीशनिंग विषय कथा होचे तो से गोटे तांकर गोटे कांसेप्ट आसिला टीचिंग मशीन कोन सिंपली हमें सेतरे कोन करि परिबा कि जेतेबेले तमे राइट आंसर दोउचो आमे तुमको इमीडिएटली रिइंफोर्समेंट दबा जे तमे भूल आंसर दोउचो सॉरी हां तमे जे भूल आंसर दोउचो देन वी विल ट्राई टू गिव यू द क्लू देन यू विल गेट द राइट आंसर otherwise what we can do we can give you enough reinforcement that a average student can also go through can do better okay then आउट जिंस कोन कर परिबा कि जदी कोनसी गोटे लर्नर कि गोटे टाइम रे करूने किबा किछि रंग वे रे करूची ताले ए संपूर्ण रिइंफोर्समेंट को हमें अवॉइड कर परिबा ताको ड्रॉप कर परिबा एंड नेक्स्ट आउ कोन ट्राई कर परिबा कि ईच स्टूडेंट मस्ट बी प्रोसीड इन देयर ओन पेस तांको हमें किछि भी फोर्स करबानी कि नाही हमको एति के टाइम दरकार किछि भी टीचर को तरफ फोर्स रहिबो नाही कि एति कि हमको एटा दरकार सेडा दरकार सेमति किछि रहिबो नाही आउ कोन करि परिबा देयर मस्ट बी कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टीचिंग मटेरियल एंड द लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस एटा हमें तीनटा जक कोऑर्डिनेट करिबा कोथरे ना डिस्टेंस लर्निंग रे बा जेतले हम डिजाइन करूचे ठीक अछि देन आउ कोन करि परिबा हमें किछि सप्लीमेंटरी रिइंफोर्समेंट रखि परिबा सो दैट द स्टूडेंट्स विल गेट मोर बेनिफिटेड विथ दिस then another concept जोटे कि स्किनर कर ऑपरेंट कंडीशन वाइज दैट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रो बेसिक जिंस कोन थिला एथरे भी हमको टाइम दिया जायतिला स्पेस दिया जायतिला ईच टॉपिक को से पार्ट रे डिवाइड करथिले स्मॉल स्टेप देथिले एंड जेतेबेले भी किछि पिला हमर किछि क्वेश्चन आस्तला तार इमीडिएटली तार आंसर देबा को ट्राई करा जायतिला तो इट इज आल्सो गिव यू द स्पेस एंड दैट टाइम ओके नेक्स्ट आसीबा theories of learning re okay so this is all about your behavioristic theory where you learn about Thorndike theory of learning and another one is Skinner's conditioning Skinner's operant conditioning then as the cognitive approach so cognitive approach पहले कौन simply हमें बुझिबा while you are doing something so it is leads to your cognitive domain where there is a possible way that you will do the perception, you will do the concept formation, you will use the language, you will do the process that is called thinking process, you will do the problem solving, the attention should be there, your memory also included in this process. So in total we can say that cognitive approach purely leads to your cognitive domain where you will do all the work related to your cognitive domain okay related to your mind so cognitive theorist रे हमें कोन नै परिबा जे तुम माने जानि थिबो कि insightful learning given by Kohler so where we give the emphasis to the whole not the part and we also give emphasis to the problem solving ability so एथरा हमें गोटे जिंस नेबा जेतला हमें problem solving and insight formation कथा कहूचे एथरा गोटे concept आसी दैट इज information processing कि हमर cognitive approach रे information केमिति processing होउची तो सेथि में से कहउछन्ती कोन through memory we can do this and there are three types of memory one is sensory memory another one is short term memory and third one is long term memory the sensory memory the work of the sensory memory just to receive the information either visually or in an auditory form the work of the short term memory is just to organize the knowledge stored it and access
the most important role is the work of the long-term memory, that is refers to the mental process by which the information is integrated with the previously stored information in short-term memory. So the work of the long-term memory is difficult, we can say it, where it needs to integrate it between the previously stored information and with the new one. Okay. So we can say that long-term memory is particularly controlled, and yeah, if you can see through your material that it starts with a stimulus, then it coming to your sensory memory, then short-term memory, then long-term memory, then you will try to respond something. Then coming to your learning as a cognitive process. So when I'm talking, so for cognitivists, learning is a cognitive process where it is a, we can say that cognitive structure of the learner can help or understanding the structure being learned or taught. So simply we can say that jaha bhi amar kichi cognitive structure rauchi ki cognitive process rauchi, it's learned and it is taught, and your work just to learn it, grasp it, and try, if there is some problem, try to solve it. So in this process we also have feedback विषय में already discussion कर सारचे, where you can rectify someone, you can find out the mistake someone, you can praise someone, like this. Okay. So coming to the educational implication of this theory, so ଏଥିରେ first ଆସୁଛି କଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତମେ first ଆସିବ, you need in this approach you need to retain knowledge. First of all, we need to retain knowledge, then we need to understand it, we need to create new cognitive structure for the long term memory. तो एटा गोटे करिबा, then यार कोन रहउची कि जेतेबेले आमे cognitive theory कथा कहूचे, so we need to give emphasis upon discovery, where emphasis must be given to the competency for spontaneous discovery, and also active learning methods should be adopted to motivate the learner to rediscover the facts. Okay. Next, it also says that it also emphasis upon the decision regarding the instructional objectives, and it also analyze the prerequisite behavior and the teaching methods. So basically आम जदि cognitive theory उपरे जिबा, तो ये हमको knowledge आमे केमती acquire करिबा, ताको store करिबा, when it is required आको आमे produce करिबा, या कम एतिकी, आ जदि किछि problem अछि ताले आमे problem solving approach को adopt करिबा. So एथरा आछी हमर कोन ना ब्रूनर कर डिस्कवरी लर्निंग. तो ब्रूनर कर डिस्कवरी लर्निंग समस्त जानिथिबो, एटा ऑलरेडी हमर साइकोलॉजी रे पढा सरची, जोथरे कि से पिलर क्यूरियोसिटी ऊपर अधिक इंपोर्टेंस देथिले. कोन पे इंपोर्टेंस देथिले, कारण से डिस्कवरी लर्निंग कथा कहउथिले. एथरा हमर तीनटा कांसेप्ट आछी, तमे भी जानिथिबो. गोटे होची कोन लर्निंग एज गोटे होची आइकॉनिक, नेक्स्ट वन इज inactive, आउट होची हम inactive, iconic and symbolic. The first one is inactive. Inactive रे हमें कौन करूचे, we try to get the knowledge through action. जैसे जानिथिबो कि हमें किछि तमे बाइसाइकल सिखुचो किंबा तमे साइकिल चलेबो सिखुचो, तमे जदि पछरे दियो साइकिल केम चलेबो, you may not say it, you just do the action, सेटा हमें करि परिबा. देन आछी कोन आइकॉनिक. आइकॉनिक रे हमें कौन करूचे, हमें इमेजिन करूचे कि इमेजिनरी करूचे कि हमें नॉलेज पाउचे केमिति थ्रू इमेजिनेशन, जेमति कि हमें किछि इमेजेस देखिले, ग्राफिक्स देखिले, ड्राइंग्स देखिले, एंड सेथुरु हमें सिखिले. जेमति कि हमें तमे सिंपली ट्रायंगल को जदि गोटे पिला को तमे डेफिनेशन दबो, जदि से सेति कि भलसे न बुझी परिबो, तमे जदि सिंपली गोटे ट्रायंगल करि देबो, से सेठी से अधिक बुझिबो. एंड थर्ड वन इज योर सिंबॉलिक, वेयर यू जस्ट गिव द मेसेज और यू ट्राई टू यूज द लैंग्वेज. किछि भी तुमको किछि बुझेबा को पड़ला, किछि कहबा को पड़ला, तुम से कोन करबो, लैंग्वेज रे यूज करबो. एंड एटा आउट जिंस कांसेप्ट आछे ऑटोनोमस लर्निंग. ब्रूनर ए ऑटोनोमस लर्निंग को डिस्कवर करथिले, ऑटोनोमी इन लर्निंग को, जोथरे से सजेस्ट करथिले लर्नर इज अलाउड टू अप्रोच लर्निंग एज एन एक्ट ऑफ डिस्कवरी, जोथरे कि से कोन करि परबो, एक्टिवली एंगेज रहि परबो, एंड सी विथ द ऑटोनोमी ऑफ सेल्फ रिवार्ड, जोथरे से निजे निजको रिवार्ड दबो.
आउ गोटे जिनस एथर आसला कि ब्रुनर कर थ्योरी रे कोन आछि से सिंपली कहथिले द वेज ऑफ स्ट्रक्चरिंग नॉलेज presentation of sequence and motivating experience and the nature of pacing or reward and punishment कि आमे गोटे पेस रखिबा जते भी आमे रिवार्ड किबा पनिशमेंट दउछे ठीक अछि तो एथरे से कोथरे एम्फासिस देथिले ब्रुनर कि आमे लर्नर को आमे ट्राई करिबा कि दैट लर्नर शुड बी हैंडलिंग perceiving and grasping the subject. He also uses his knowledge for problem solving. Subject matter should be present inactively, iconically, and symbolically so that he can comprehend the knowledge in a systematic way. And then we can also say that Brunner also recognized the role of extrinsic and intrinsic reward. तमे extrinsic and intrinsic motivation रे पढ़िथिबो दीटा टाइप रो मोटिवेशन थिला जो सेटा कि सेटा भी यूज करा जे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोन जेते बेले आमे तांको आउटसाइड रो किछि मोटिवेशन दउ जे सपोज देखितो छोटे बेले जतला आमे पिक्चर्स देखे किबा जदी से बुक ता सेति कि अपीलिंग करथिबो किबा तुमको सेति अट्रैक्टिव लागुथिबो यू विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट बुक सेटा को आमे एक्सट्रिंसिक कहि परिबा इंट्रिंसिक कोन कहि परबा रिवार्ड जोटे कि आमे तुमको किछि भी तुम भितर आसला नाइ आई वांट टू टॉप इन द क्लास कि मते एटा पढिबार अछि एटा मते सारिबार अछि सेटा को इंट्रिंसिक कहबा एंड इंट्रिंसिक रिवार्ड इज मच मोर इफेक्टिव देन एक्सट्रिंसिक वन ओके नेक्स्ट आसीबा there is you can see the comparison box between the behavioristic and the cognitive approach. So behavioristic basically there is a connection between the stimulus and response as you can see, and it here in cognitive approach learning involves perceptual and reorganization which is related to insights. Then it says that learning is जोटा कि हमें कहूचे same similarly learning is insight एठे हमरो stimulus and response कथा कहूचे entry behavior रे हमरो कोआ जाउची it is a complex behavior can be conditioned जोटा कि हमरो classical conditioning and stimulus conditioning कहूची एथरे कोन कोआ जाउची ना previous knowledge is used as a base from which a learner can develop his own new cognitive structure एठी हमरो motivation केमति दिया जाउची ना organic drives such as hunger fear anger love et सब रोचे एथरे हमरो कोन रोचे ना you have a goal you need to have curiosity expression रोचे तो एतक तमरो बेसिक जदि हमें कहि परिबा the difference between behavioristic and cognitive approach differences then आछे हमें कोठी के now we will try to synthesize between the behavioristic and cognitive approach. When we are going to synthesize between cognitive behavioristic and cognitive approach एथरे हमर basically हमें try करिबा ज्ञानी कर views टा को रखिया पे because ज्ञानी is the one through which he synthesize between the cognitive behavioristic and cognitive approach. अच्छा एठी केते जण ज्ञानी कर hierarchical learning विषय रे जानिचो मते टिके कहि परिबो कि who knows about it ज्ञानेश hierarchical learning पढ़िचो कि नाही जदि न पढ़िचो आमे डिस्कशन करिबा एनीवन किछि मेसेज रे लिखि पारो किबा निजु को अनम्यूट करी कहि पारो ज्ञानींकर हायरार्किकल लर्निंग तमे माने पढ़िचो जदि पढ़िनो मु डिस्कशन करिवि ता परे तार एजुकेशनल इंप्लिकेशन को जिबा एनीवन ओके मु दे अच्छा तमे एटा पढ़ि के आछो रे किस रेस्पोंड करो देखिए अछंदी सस्मिता ओके तो मु कंटिन्यू करूची
तो जदि आम ज्ञानेकर हायरार्किकल लर्निंग को जीवा से आमर 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग थिला जो थे कि फास्ट कहते सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग, verbal association, multiple discrimination, concept learning, rule learning and problem solving. तो signal learning basically बुझला हमर कोन द condition between the individual जो से कि हमर conditional theory थिला जो थे कि signal किबा गोटे learning involve होतला स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग रे से बेसिकली गोटे स्टिमुलस रखिथिले जोथि कि तमे करंट रेस्पॉन्स दउथिले सेटा कमे रिवार्ड करथिले चेनिंग रे से कोन कहिथिले कि टू और मोर प्रीवियसली लर्न स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शंस आर लिंक्ड टुगेदर verbal association कोन कहूची ना चेन्स दैट आर verbal एग्जांपल हमें नै परिबा कि जदि गोटे पिला आइडेंटिफाई करूची कि यस इट इज ए बॉल देन से प्रॉपर करि परची ना इट इज ए रेड बॉल सेमती मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन रे से कोन करूची से बिटवीन द आमे कहि परिबा verbal और मोटर चेन रे से ऑलरेडी डिस्टिंग्विश करि परिबो कांसेप्ट लर्निंग रे आमे कोन कहूचे कि गोटे पिला किछि भी गोटे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जहाँ कि गोटे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रोचे किंबा जोटे कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सिखुचे सेटा को से डिस्टिंग्विश माने से कॉन्सेप्ट से सिखि परिबो सेटा किछि भी शेप हो कलर हो किछि भी हो रूल तापर आछे हमर रूल लर्निंग रे से कोन कहूचे कि गोटे रे दीटा कॉन्सेप्ट से एकाठी सिखि परिबो जेमति कि जदि हमें कहूचे कि वाटर कैन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर will boil तो एठी से जोड़े कांसेप्ट सिखुची गोटे होची कोन ना नाइ टेम्परेचर और बॉइलिंग वाटर तो से कथा से कहउछन्ते कि रूल लर्निंग रे हम जोड़े कांसेप्ट एका संगे रे पिला को सिखै परिबा देन आछे प्रॉब्लम सॉल्विंग रे कोन कहउछन्ते ना जते बेले हम रूल लर्निंग कहउचे कि नाइ हमर किछि भी प्रॉब्लम देले बा चिल्ड्रन कोड प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रे पकेले तो से आराम से सेतरे से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पाके थिबो किसी से प्रॉब्लम टा को सॉल्व करि परिबो देन एथरा आछे ज्ञानेकर तो क्वेश्चन 9 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसिंग रोचे जोथरे कि हमें सेतरे तीनटा स्टेजेस रोचे जोथरे कि गेनिंग अटेंशन informing the learner of the objective stimulating a recall of prerequisite learning presenting the stimulus material providing learning guidance eliciting the performance providing feedback about performance correctness and assessing the performance and last one is the enhancing retention and transfer. So these are the 9 factors which included the learner's psychological state and cognitive process is required for learning. Then एटा कोन पे हम जदि हम देखिबा एतरे मेनली कैटेगराइज करबा जो तीनटा जिंस को सेथे रोची प्रिपरेशन फॉर लर्निंग acquisition of performance and third one is transfer of learning. So drawing learners attention to the stimulus or informing the learners of learning goals or objectives then providing recall or prerequisite behavior or learning first आमे कोन करबा आमे प्रिपरेशन करबा लर्निंग पई then we'll try to acquisition of performance where हमरा कोन काम रहइबो presenting stimulus materials we try to permitting temporary storage of stimulus features in working memory एगुडा का हमें करि परिबा then transfer of learning रे जोटा हमें सिखिचे ताकू केवल जोठी जदि अलग जगह हमको दरकार ताकू हमें ट्रांसफर करिबा नेक्स्ट अछि ज्ञानेकर मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन जोथरे कि हमें कहूचे कोन जतक हमें भी पढ़ी के आसबे तांकर 8 स्टेजेस हमें पढ़िले किबा स्टिमुलस वेरिएशन पढ़िले तो ये सबु जिंस को हमें कोन करिबा हमें ट्राई करिबा कोन जेतला हमें सेल्फ लर्निंग मटेरियल यूज करूचे तो से प्रत्येक स्टेप केमते हमें इंक्लूड करिबा एंड हमें ट्राई करिबा कोन ना इंटेलेक्चुअल स्किल मोटर स्किल इंटेलेक्चुअल स्किल कोन इंक्लूड करूची जेमति कि तमर रीडिंग राइटिंग हैंडलिंग नंबर सेगुडा को मोटर स्किल रखिबा जोटे कि तमर फिजिकल स्किल जोटा रहउचे सेटा जन तम फिजिकल एनवायरनमेंट रे सीक्वेंशियली तमे करि परिबो कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज रखिबा एंड एटीट्यूड कोन ना जते बेले तमर किछि डिफिकल्ट सिचुएशन आसीबो किबा यू कैन चेंज विथ द चेंजिंग सिचुएशन जदि किछि सेमति सिचुएशन आसुची किबा लर्निंग एनवायरनमेंट रे तमे चेंजेस करि परिबो तो बेसिकली जदि हम एजुकेशनल इंप्लिकेशन ऑफ ज्ञानेस थ्योरी ऑफ लर्निंग देखिबा तो एथरे से कहउछन्ती कि हमें कौन सिखिबा फर्स्ट होची प्री रिक्विजिट बिहेवियर कि जदि मते किछि लर्निंग करिवार अछि तो ता पय मते ऑलरेडी को टाइप रो बिहेवियर मो पाके डेवलप करिया दरकार जेमति कि मु ट्राई करिवि लर्न करिया पय फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली मु फर्स्ट मिश्रण सिखिबि नॉट कि गुणन तो से कथा कहउछन्ते हमर प्री रिक्विजिट बिहेवियर रे रहइबो कि वी विल मूव फ्रॉम सिंपल टू कांसेप्ट देन व्हाट शुड बी द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स
we know individual differences are there. Students will not be ready at a time, so we need to motivate them. Then ଆସିବ କ'ଣ cognitive process and instruction को cognitive process and instruction ରେ କ'ଣ ଆସିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା transfer of learning, self management skill of the learner and teaching learners. We should learn to teach the learners the skill of problem solving ability. So this is the educational implication of Gannett hierarchical learning. Then come to the taxonomy of learning outcomes. जैसे तमें जानथिबो जेंति कि मैं ऑलरेडी कहि सारी छी देयर आर थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग दैट एंड थ्री डोमेन्स दैट वन फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर तो तमें ब्लूम को ना सुनिथिबो ब्लूम एंड तांका एसोसिएट्स माने से माने ट्राई करथिले एटा को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रे नेबा पई तो फर्स्ट हमें आसीबा कोठी के कॉग्निटिव डोमेन को कॉग्निटिव डोमेन रे हमर 6 स्टेजेस आर देयर फर्स्ट वन इज नॉलेज second one is understanding or comprehension, third one is application, fourth one is analysis, fifth one is synthesis, and last one is evaluation. We will try to get one by one. First one is knowledge. So knowledge kotha kochi, it means we just need to recall or remember your already learned material. Just if I will ask you कि ताजमहल कोठी अछि बा ताजमहल कोठी अवस्थित के simply answer the Agra. It means you have already learnt it. It is stored in your memory and you just reproduce it. So ताकू ही हमें कुछ कौन knowledge. तो next आउछि कौन understanding बा comprehension. तो understanding और comprehension रे हाँ simple आउ गोटे जिनस देखिबो जेतला हमें knowledge कथा कहूचे सेतरे हमर किछिटा terminology use करा जाय जेमति कि name the capital of India. Name the capital of Odisha. तमे name define रे suppose तमे simple define education, define learning, label, state. तो एगुड़ा को ए सब जेतले terminology use करबा it means we are going to access the knowledge part. When I'm talking about understanding रे you will go through the deeper one. You will try to go through the learn material in a deep sense. You will try to response. You will try to analyze. जेमति कि हमें कोचे जेतले तमे analysis करिवो जेतले तमे interpretation करिवो जेतले तमे summarize करिवो सेगुडा को सब तक तमे understanding के आसीबो then आसी तमरो कोन Lina please mute yourself. Okay. Then आसे application रे हमें कोन करि परिबा हमें discover यूज करि परिबा produce relate simply application रे हमें कोन करछे जो learn material हमें थिबा जो material हमें already जानिचे बुझिचे ताको हमें न्यूज concrete situation रे केमिति लगे परिबा analysis कोन करिबा analysis is just a breaking part हमें किछि ओडी जिंस को पाइले फाइंडिंग्स पाइले ताको हमें ट्राई करिबा ताको पार्ट करिके ताको हमें आइडेंटिफाई करिबा किंबा हमें ट्राई करिबा ताको किछि नुआ रिलेशनशिप रे कन्वर्ट करिबा पई तो एठी कोन करिबा हमें को टर्मिनोलॉजी यूज करिबा आइडेंटिफाई इलस्ट्रेट सबडिवाइड डिफरेंशिएट ए सब वर्ड यूज करिबा सिंथेसाइज रे कोन करिबा एनालिसिस रे जोगडा को हम पार्ट करथिबा ताको हमें पुट टुगेदर फॉर ए न्यू होल तो एठी हमर क्रिएटिव एबिलिटी भी हमर देखा जिवो जोथरे कि हमें कोन करि परिबा कैटेगराइज करि परिबा कंबाइन करि परिबा डिजाइन करि परिबा रीअरेंज करि परिबा समराइज करि परिबा we can write it, we can reconstruct it. And last one is evaluation. Evaluation रे हमें कौन करि परिबा we will try to concern with the value judgment of any statement, achievement of the learner and material. So it's basically हमें judgment करिबा. So this is all about your cognitive domain. Then come to the affective domain. Affective domain जेमति कि हमें कहूचे there are 3 H involved, that is head, heart and hand. Head is your cognitive part, heart is your affective part. So simply when I'm talking about your interest, your attitude, your values, so it relates to your affective domain. So एथरे हमरा केतरा जे हमें stages को जो first one is reception. So reception is all about your willingness to attend a particular phenomena or stimuli. That is your reception. So we need to choose your what should be the outcome of the learner here. Here the outcome is to the student can choose, describe, identify, select. All these things will come under it.
Then come to the responding. Responding means here the active participation of the distance learner. How actively you are responding. So if you are not, you don't have any interest, then you are not going to respond. So it's coming under your responding, where you can present, you can write, you can discuss, when you can perform. So these are the outputs. Then next one is your valuing. Valuing means we need to, or the learner need to value your himself or herself. You will value or yourself. एथर कौन outcome आसो? You will report, you will complete, you will explain, justify all these things. Then आसुची तमर कौन? Organization. Organization means, it means your valuing your stage, we can say. Here we are going to organize or bringing together different values. You need to resolving conflicts between them or conflicts between the students. You can to read, you can to build an internally consistent value system. For example, we can say we can prepare a vocational plan for satisfying the human needs, both for the economic security and social service. Then next one is characteristics by a value or a value complex. In this stage, we need to have a particular individual value hierarchy. We will organize it. We will try to control the behavior of an individual, so that a learner can never repeat a unexpected or unwillingly behavior. So एथरे तमर outcome रहइबो, you will display, you will listen, you will revise, you will solve or verify. Then third one is your psychomotor domain, which is related to your hand. एथरे हमर कोन सब स्टेजेस, तीनटा स्टेजेस मान तीनटा कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली रहउची. One is response chain. Response means you will involve in a motor of chain motor of response, जोथरे कि तमे स्विमिंग कोच और ड्राइविंग कोच और राइड कोच, तो एगुडा का मस्कुलर मूवमेंट आसीबो. देन आसी तमरो मूवमेंट कोऑर्डिनेशन. मूवमेंट कोऑर्डिनेशन रे कोन, जोथरे कि तमे सपोज एपडे हैंडल धरि कि साइकिल चलाउछ एंड गोडो भी तमरो साइमल्टेनियसली चालुची, तो एटा हमरो मूवमेंट कोऑर्डिनेशन आसीबो. देन आसी हमरो रेस्पॉन्स पैटर्न. रेस्पॉन्स पैटर्न रे कोन रहउची, we will ride a bicycle without any making error. जैसे कि तमे जहाँ भी किसी करूछ गोटे चेन सिस्टम रे करबो. नेक्स्ट आसी तमरो कोन, इतरा माने क्वेश्चन रे सातरा स्टेजेस अछि कोथरे ना इ हमर साइकोमोटर डोमेन रे. फर्स्ट वन इज परसेप्शन, सेट, गाइडेड रेस्पॉन्स, मेकानिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवरट रेस्पॉन्स, adaptation and origination. तो फर्स्ट आसीबा कोठी कि ना परसेप्शन को. परसेप्शन कोन कहूची, you will aware about the objects qualities relations by way of sense organs, जोथरे कि तमर आउटकम कोन रहइबो, to choose, identify, select and relate. Then आसी तमरा set. Set means it is a preparatory adjustment of readiness. It means you are set to do anything in or to do some work. जेते कि हमें begin कहि परिबा, आरंभ करछो, तमे move करछो, react करछो, you are volunteering yourself for doing some physical work. Then आसी हमरा guided response. It means this is a very first step for your developmental of skill. एथरा हमें कोन करि परिबा, we can assemble, we can build, we can sketch, एगुडा का आसबो. Then fourth one is the mechanism. Mechanism means that here the learner to response has become habitual. It means suppose classroom को teacher जतला entry करछंती, you are habituated to stand. तो सेटा को हमें कहि परिबा कोन mechanism रे कि you are habitual, जोथरे कि तमे outcome कोन आसो, you display your manner, you can measure, you can organize, you can build. Then आसो कोन complex overt response, जोथरे कि हमर कोन करा जाउची ना मोटर एक्टिविटीज गुडा को कॉम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न सहित ताको हमें कोऑर्डिनेट करूचे. जेमति कि हमें असेंबली करिबा, एथरे हमें कंस्ट्रक्ट करिबा, हमें तो किछि जिंस फिक्स करिबा, किछि जिंस मैनिपुलेट करिबा. देन नेक्स्ट वन इज adaptation. So adaptation concerned with the skills that are so well developed that the learner can modify movement patterns to fit specially requirement or to meet a problem situation. जेमति कि तमे किछि जिंस को रीअरेंज करिवो, रीऑर्गेनाइज करिवो, अडॉप्ट करिवो. लास्ट वन इज योर ओरिजिनेशन.
Origination refers to the creating of new movement pattern to fit in a particular situation or specific problem. जो थरे कि तमे again किछि arrange, combine, design or originate करूचो. So this is all about your three domains of three domain जोटा कि आमे कौन कहले ना cognitive, affective, psychomotor. यार जहाँ भी किछि educational implication अच्छे आमे unit 3 रे पढ़िबा. Now come to the second unit, that is your theories of communication. Okay, ଯେତେବେଳେ ଆମେ theories of communication କହୁଛେ, so basically communication comes from a word that is ଯଦି ତମେ ଜାଣିଥିବ communicare, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି to make common. So ଯେତେବେଳେ ଆମେ make common କଥା କହୁଛେ, simple ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ from a layman point of view ରୁ କହିଥିବୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି communication ତମେ କଣ ବୁଝିବ, I'm the source or I'm the sender, ମୁଁ କଣ କରୁଛି କିଛି ଗୋଟେ message ତମକୁ ଦଉଛି, ଯେମିତି କିଛି ମୁଁ କହୁଛି and ତମମାନେ ଶୁଣୁଛ, ତ that is called communication. ଆମେ ବେଶୀ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ଶୁଣୁଛ, ତମେ ମାନେ ଯଦି ତମର କିଛି changes ଆସୁଛି, we can say yes my communication is a successful one. ସେଇ ବିଷୟରେ detailing ରେ ପଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ. So first ଆସିବା ଆମେ କୋଉଠିକି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ communication କଥା କହୁଛେ, first ଆସିବା types of communication କୁ ଆମେ କେତେ type ର communication କରେ. ତ first one is intrapersonal communication. ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ବେଳେ ବେଳେ we try to communicate with one self or with own self. ମୁଁ ନିଜ ସହିତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ନିଜ ସହିତ କଥା ହଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଜେ କିଛି ଭାବୁଥିବ, ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରୁଥିବ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଜେ ବସି ଡାଏରୀ ଲେଖ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କମିଂ ଅଣ୍ଡର ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ. ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିମ୍ପଲ, ଦି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତମେ ବା ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆର୍ ଗସିପିଂ ୱିଥ ଇଚ୍ ଅଦର, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଥିବା, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦି ଜଣ ସହିତ ବସି କଥା ହଉଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ. ଗ୍ରୁପ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା କି ସ୍ମଲ ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛନ୍ତି, 2 ରୁ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବସିକିରି ଗୋଟେ କମିଟି ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଗ୍ରୁପ କମ୍ୟୁନିକେସନ. ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯଦି ତମେ କିଛି ଦେଖିଥିବ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ପିପୁଲ ଆର୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଇଜ ଦେୟାର, ଯେମିତି କି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ରାଲି ହଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଆମର ପଲିଟିସିଆନ ଯୋଉମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିଚ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ସେମିନାର କିଏ ଯେବେ ସ୍ପିଚ ଦଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତମେ ଦେଖିବ କିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ସେଠି ଯୋଉମାନେ ସ୍ପିଚ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ କହିବା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ open air concert କରୁଛେ, ଯୋଉଥିରେ କି 1000 peoples are there. So basically there are 4 types of communication are there. One is intrapersonal, when you are talking to yourself. Another one is interpersonal, when you are going to talk about talking with your friend. One is group communication, when group of people are there. Then mass communication, when thousands of people are there. Then come to the purposes of communication. So when I'm talking about purposes of communication, so without any purpose we cannot communicate. Suppose my purpose here is just to make you understand the concept, that is your how to design the learning material, जोटा कि आम से आज क्लास करूचे, राइट. तो मु किछि भी जेतेबेले तम माने निजर आइडियाज हो, निजर व्यूज हो, यू ट्राई टू कम्युनिकेट, देयर आर 2 पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन्स आर इन्वॉल्व. जेमति कि आमे कोन कहूचे कि गिव गेट और एक्सचेंज इनफॉरमेशन. मु तुमको बर्तन किछि इनफॉरमेशन दउची किबा विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट इट. नहले आमे कोन करि परिबा, विल ट्राई आमे कम्युनिकेशन कोन पय करू, टू मेंटेन ए रिलेशनशिप. Another purpose is just to give you the power, or we can say that to gain, maintain or exert power over others. जेतेला सेति पय आमे कम्युनिकेशन करू, to make decision about what we think and do, to express our ideas, to make sense of the world or our experience of it. ए सब जिंस पय हमर this is the purpose of communication. Okay, next one is processes of communication. When I'm talking to processes, ଆମର କଣ ଡିଜାଇନ ରହୁଛି ତମେ ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ linear model of communication ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି simple ଜଣେ source ରହିବ. Suppose source ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ, I will try to encoding. Encoding means ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କହିଲି, then ସେଥିରେ ଗୋଟେ message ଆସିବ. message କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ପଚାରିବି ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଯୋଉଟା ବି ତମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢା ଯାଉଛି ସେଗୁଡାକ ତମେ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛ. then decoding ରେ ତମ ମାନେ ଶୁଣିଲ, then ତମ ପାଖରେ ସେଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା, destination ହଉଛ ତମେ ମାନେ. So that is a linear model of communication where source, encoding, message, decoding and destination will involve thoroughly. Okay,
देन तो गोटे सिंपल कथा होचे एथरे कोन जेतले एई टाइप रो हमें कम्युनिकेशन देखुचे तो इट इज डिकोडेड हैला तुम माने सुनुचो सुनुन मु केमिति जानिबी सेति पई हमर आउ गोटे मॉडल अछि दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एथरे हमें कोन करबा वी विल इनपुट हमें कोड करबा it is go through a proper channel or communication then you will decode it decoding पर एटा आउटपुट कोन बाहरिबो ना फीडबैक you will give me the feedback कि नाइ तुम माने बुझिलो ना बुझिलोनी सपोज मु कथा होउची तो जते जण सेति मते रेस्पोंड करिया दरकार नाइ yes I am able to understand it okay then आउ गोटे जिंस आछी कोन आउ गोटे मॉडल आछी that is called contextualized model of communication contextualized model रे हमर कोन आसीबो will sending जेमति कि मु सेंड करली एनकोड हैला मेसेज एनकोडिंग पर मेसेज प्रॉपर चैनल देकरी गला देन डिकोड हैला एटा रिसीवर रिसीव कला रिसीवर तापर कोन करबो ही विल एनकोड इट जेमति कि तमे तले कथा होचो तमे गोटे कथा पचारले कि मु सपोज पचारले पिला तमे माने केमिति अछो हम तो सेंडर वन एनकोडिंग कली मेसेज मेसेज प्रॉपर चैनल गला थ्रू द फोन तम माने डिकोड कलो ट्राई कलो बुझिबा पे क्वेश्चन होचो कोन तमे माने केमिति अछो you are the receiver you will now encoding a message से पुणी फोन देकरी डिकोडिंग हबो मु बुझिया को चेष्टा करी यस तमे माने भलो अछ तो एटा टोटली गोटे हमर साइक्लिक वे रे चलिबो तो ताको हमें कोन कहूचे contextualized model of communication which is also beneficial for the communication purpose or for both the sender and the receiver because I don't know suppose clear cut information should not be there so I am not able to understand your able to understand it or not suppose मु किछ जिंस तुमको कहूची and you are unable to understand it तो एठी कोन आसीबो गोटे मिस कम्युनिकेशन बा आसी जिवो सेति पय कहूचे कि कम्युनिकेशन रो जो गोल अछि सेटा अचीव होची न नै सेटा हमकु देखिबार अछि तो सेति पय जते बेले फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमकु कोन करिया को पड़िबो द सेंडर नीड टू यूज द सिंबल और साइन प्रॉपर्ली then the receiver get the meaning correctly then the receiver responds correctly then it should be a process communication is a flawless ताले हमें कहबा एटा गोटे flawless communication otherwise it will called as the miscommunication then come to the technologies of communication तो अरे गोटे सेकेंड पिला माने मु फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट डिस्कशन करि दउची जो मानकर जहा डाउट अछि सेटा टिके लेखि देई थाओ ठीक अछि एट द एंड ऑफ द क्लास वी विल डिस्कस ऑल द डाउट्स क्लियर Yes, ma'am. आर यू देयर ओके तो आसीबा टेक्नोलॉजीज ऑफ कम्युनिकेशन को तो टेक्नोलॉजीज ऑफ कम्युनिकेशन रो फर्स्ट से क्वेश्चन इमिटेशन हम सिखुचे केमति सिंपली इमिटेट करिकरी आमे अन्य मानन को इमिटेट करछे तांकर गेस्चर तांकर पोस्चर एटा भी वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जेमति कि आमे छोट पिलाटा को कहूचे तू ताली बजा से ताली ताली कहले से ताली बजाउचे किबा ताको आमे ताली ताली करके देखेले से ताली बजाउचे इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बा टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन से इट देन सिंपल आमे जति जनको आमे स्माइल करूचे तो बैक रे हमको छोट पिले भी स्माइल करूचे आमे किछटा सिंबल देखौचे से त सिंबल देखौचे तो थ्रू सिंबल वी आल्सो कैन कम्युनिकेट देन नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज रे आमे रिटन लैंग्वेज हो किबा स्पोकन लैंग्वेज थ्रू वर्ड्स ऑफ सेंटेंस एगुडा को सब जो ग्रामर टेक्निक्स लिंग्विस्टिक फोनोलॉजी सेमाटिक फोनेटिक्स एटा सब तक आमे देखि परिबा देन आसे प्रिंट मटेरियल तमे ऑलरेडी जानछो जोडे कि हमरो कोथरे रिटन लैंग्वेज जोथरे यूज करा जाउची जोथरे कि हमें सिंपली नौचे ताको पढुचे एंड ट्राई टू कम्युनिकेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिटन मटेरियल मोशन पिक्चर कोन सिंपली तमे जले किछटा पिक्चर नौचो से पिक्चर रो तमे किछि गोटे जिंस तमे सेथुरु कि भाबुचो नाइ एई पिक्चरटा एई मेसेज देबा पई ट्राई करूची सेथरे किछटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रखा जायछि तो मोशन पिक्चर सेटा को करा जिवो कुआ जिवो ब्रॉडकास्टिंग जोडे कि हमर ऑलरेडी तम माने जानिथिबो रेडियो हो टेलीविजन हो जोटा हमको देखा जाउची हमें डे टू डे लाइफ रो देखुचे सेथुरु किछि कम्युनिकेशन करबा पई बा टेक्निक्स हमें सिखुचे तो आसे बतन एजुकेशनल इम्प्लिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन कोन रहइबो तो एजुकेशनल इम्प्लिकेशन में फर्स्ट हमें कोन देखुचे कि नाइ हम किछि इनपुट दोचे इनपुट हमर एसे कोन कम्युनिकेशन ना नॉलेज स्किल स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ए सोसाइटी एगुडा सब हमर इनपुट रहला जोटे कि रे हम कोन करछते ना सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड करे जाय परिबो जोटे कि किए मैनेज करिवे ना जने टीचर मैनेज करिवे देन तापर हम देखो कोन करिबा
will try to put forth facts, ideas, attitudes, sentiments and जेतले कोडिंग आसीबो एतक मेसेजेस आमे पठेले देन ताकू एनकोड करिबा केमिति एनकोडेड रे आमे कोन करछे ना साउंड visual message, print material, non-verbal message एगुड़ा को सब तक कोडिंग रे आमे यूज कले देन ताकू आमे ऑडिबल रखिबा कि पिला कोन सी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन रे आमे कोन कले रिसीवर पाखु को पठेले एंड थ्रू ऑडियो विजुअल टीचर टॉक मेथड हो एनी टाइप ऑफ मीन्स रे सेटा पिला पाखरे पहुंचबो किंतु जेतले कम्युनिकेशन आमे क्लासरूम कथा कहूचे क्लासरूम इम्प्लिकेशन बा एजुकेशनल इम्प्लिकेशन कहूचे देयर आर आल्सो सर्टेन इंटरप्ट्स आर देयर जेमति कि जदी हमर एनवायरनमेंट रे बाहर किछि चाउटिक एनवायरनमेंट चलछि किबा टीचर किछि कंस्टेंटली कहउछन एंड बाहर किछि नॉइज आछि तो से सिचुएशन रे एटा इंटरप्ट हे परिबो किबा मु तुमको किछि गोटे कम्युनिकेट करी किछि गोटे बुझेबा को चेष्टा करछि एज ए टीचर एंड एज स्टूडेंट यू आर डिकोडिंग इट इन ए रॉन्ग वे तो सेठी इंटरप्ट हे परिबो देन आसबा कोठी कि हमर कम्युनिकेशन थ्योरीज को तो कम्युनिकेशन थ्योरीज रा हमर फर्स्ट रहबो कोन ना मैथमेटिकल थ्योरी तो पिलाने मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन इज नथिंग जस्ट बट एडिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स जेमति कि तमे टेलीफोन केबल किबा रेडियो वेव्स तमे जो ऐड करूचो सेथरे हमें ऐड करि परबा आ सब तक माने चैनल्स पूरा सिंपल रहबो जेमति कि जणे सोर्स रहिला सेंडर रहिला कि से इनपुट कला मेसेज जने चैनल थ्रू रे जने डिकोड हला रिसीवर रिसीव कले से जो हमर तम माने फिगर 2 टा जोटा अछि अगेन सेटा हमर फीडबैक देके आसीबो तो ए जो पूरा चैनल टा को हमें कोन कहूचे ना मैथमेटिकल थ्योरी केबा केवल एथरा कोन हमें इंक्लूड करूचे ना चैनल और मीडियम कोन रहबो जेमति कि पतन हमें फोन रे यूज करूचे जेमति कि हमें गूगल मीट करूचे तो सेटा होचे हमर चैनल तो एटा को हमें कोन कहूचे ना मैथमेटिकल थ्योरी जार एजुकेशनल इम्प्लिकेशन कोन रहइबो तो सिंपली एथरा हमर स्टूडेंट्स रहबे 50 रु 60 किबा मैक्सिमम 100 किंतु 100 ऊपर को जिबेनी जोथरे टीचर कोन करिवे सिंपली किछि पढेबा को पढेबे पढि सरला पर एटा पिला मानन पाखरे पहुंचबो थ्रू मटेरियल हो प्रिंट मटेरियल हो किंबा तमर यूट्यूब चैनल किबा तुम वीडियो करके पठै परिबो किछि भी टेक्नोलॉजी यूज करि परिबो रेडियो यूज करि परिबो किछि भी यूज कला पिला पाखरे तंते तमे ऑडियंस पाखरे पहुंचेबो एंड लास्ट रे तमे तांकोठो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे जानिबो केमति रहला तमरो हां एइ थोड़ी जिंस आछे कि जेतले हमर मैथमेटिकल थ्योरी रे वी आर नॉट गोइंग टू गेटिंग द फीडबैक ओके किंतु जेतले हमर नेक्स्ट थ्योरी जोटा कहूची इन्फॉर्मेशन थ्योरी एक्चुअली मैथमेटिकल थ्योरी रो आसीची जो थरे केवल आमे गोटे जिंस ऐड करचे दैट इज फीडबैक ये मु जोटा टीचर पढौछन्ती क्लासरूम रे सेटा रिटन लैंग्वेज हो किंबा बॉडी मूवमेंट हो किंबा स्पोकन वर्ड्स हो जहां पे किसी से कम्युनिकेशन करूछन्ती से कम्युनिकेशन परे वी विल ट्राई टू गेट द मेसेज और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स आल्सो से माने फीडबैक देबे दैट दे आर गोइंग दे आर एक्सेप्टिंग और दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर मटेरियल और नॉट तो द एजुकेशनल इम्प्लिकेशन रे सिंपली जोटा कि मैं तुमको कहली जदी सपोज तमे क्लासरूम रे सपोज सम्मान एटी जति जण स्टूडेंट अछ मु किछि बोले जिंस तुमको पढौची एंड दे आर अनेबल टू गेट इट बट यू आर नॉट रेस्पोंडिंग सपोज मु तमे मते के जणे कहलो नाही मु एटा बुझी पारुनी तो मु जानिबि जे नाही मो कम्युनिकेशन ठीक चाली छि सपोज तमे माने जदी क्लासरूम देखतो पिला न बुझी पारले गोटे पजल लुक रे देखंती तो जदी सेमति किछि लुक दोहे माने दउछन्ते किबा बुझी पारनांती किबा अटेंशन दोनांते ताल जानिबो जे कम्युनिकेशन फेलियर हेछि जदी फीडबैक दउछन्ते क्वेश्चन पचारछन्ते किछि भी तमको इंटरेक्शन करूछन्ते ताले कहि परिबा हमर कम्युनिकेशन ओके राइट डायरेक्शन रे चाली छि थर्ड वन इज योर फ्री प्रेस एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरीज ओके ए जो थ्योरी टा आसी जे एक्चुअली एटा द फ्री प्रेस थ्योरी एक्चुअली जोटा हमर लिबरेशन थ्योरी ऑफ साइबर एंड अदर्स जे देती तांकोठो आसी जोथरे कि हमर यूएस रे जते गोटे मूवमेंट चलथिला सेथिरो एटा आसी जोथरे तुम किछि भी कहबार सुযোগ मिलिबो यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज you are free to express your ideas you are free to express your feelings but who extent पर्यंत जे पर्यंत you are not going to hurt the person who is in front of you जदि तुम किछि भी कहि चलछ and it hurts someone ताले एटा हमें acceptable नुहे तो people आमे जे भी रहबे से मानकर एटा हम तांको कोन करि परिबा ना इस जो कम्युनिकेशन थ्योरी टा को हमें ऑनेस्टली नै परिबा
किंबा एटा को अडॉप्ट करि परिबा एथरा हम किछि भी जिंस कहि परिबा किछि भी जिंस हमर फ्रीली एक्सप्रेस करि परिबा किंतु विदाउट हर्टिंग someone. Okay, so basically there are three types of communication theory are there. One is mathematical, another one is your informative, and third one is free press. जोटा कि हमें कौच कौन you are free to share anything किंतु सेथरे गोटे वर्ड अछि सोशल रेस्पोंसिबिलिटी. इट मींस हमें अन्य मानन को काहा को भी हार्म करि परिबो नाही. इज दैट क्लियर? अच्छा बर्तमान मते कुह आमे फर्स्ट यूनिट टा तो मु पछे बुझी नेबी कोन होइछि कम बुझछो नै. कम्युनिकेशन थ्योरी बुझी पारलो? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इंट्रा बुझा पड़छि. ग्रुप मास चारटा थिला. पर्पजेस ऑफ कम्युनिकेशन हमर कोन कोन पर्पजेस प्रोसेसेस टेक्नोलॉजीज एजुकेशनल इंप्लिकेशन देन कम्युनिकेशन थ्योरी रे हम तीनटा कहले मैथमेटिकल थ्योरी इंफॉर्मेशन थ्योरी फ्री प्रेस एंड सोशल रेस्पोंसिबिलिटी थ्योरी. बुझा पड़िला ना कार किछि एई यूनिट रो डाउट अछि? You can write, you can unmute yourself, किछि भी करो किंतु रेस्पोंड करो so that I can go to the unit 3. Nothing. किछि डाउट अछि? Okay, thank you सोनू प्रभा. It means you are clear. Next अच्छा वर्तमान आमे जहा सब पढ़िले. अच्छा मते टिके खाली कहि दियो कारण थर्ड यूनिट को आसिलेनी आमे. थर्ड यूनिट टा रिलेटेड टू योर फर्स्ट यूनिट जोथि कि हमर लर्निंग थ्योरीज थिला. टिके जति मने पके दबा हमर जोथि कि हमें बिहेवियरिज्म विषय पढ़िले जोथि कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी थिला. तापरे हमर स्किनर कर ऑपरेंट कंडीशनिंग थिला. आमे गैने कर हायरार्की पढ़िले. आमे ब्रूनर कर डिस्कवरी लर्निंग पढ़िले. तार एजुकेशनल थ्योरी पढ़ले. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़िले. सेथरे किछि कार डाउट थिला कि? कारण बिकॉज आमे बर्तन एजुकेशनल इंप्लिकेशन को जिबा जोटे कि इम्पोर्टेंट कारण कोर्स डिजाइन करिबारे हमर केमिति सब थ्योरीज मानको जोटा तमर अछि भी इंप्लिकेशन ऑफ थ्योरीज फॉर कोर्स डिजाइन. तो कोर्स डिजाइन रे से थ्योरीज मानको इंप्लिकेशन हमें पढ़िबा. तो सेथिरे आगो से थ्योरी गुडा को बुझिबा दरकार. से थ्योरी समस्त बुझिछो? Yes or no? ओके तो आम आगू बढ़िबा. तो लर्निंग थ्योरीज एंड डिस्टेंस एजुकेशन रो स्टार्ट करिबा. जेमति कि हमें कहिथिले कि हमें बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी विषय पढ़िले. तो बिहेवियरिज्म रे फर्स्ट रे हमें कोन कहले कि देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. तो बेसिकली जेतला हमें स्टिमुलस रेस्पॉन्स कथा कहले हम सेतरे कोन कहले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कथा कहले टीचिंग मशीन कथा कहले जोथरे कि पिला तार निज पेस रे निजे मूव करिवो. तो एई जो निज पेस रे निजे मूव करिवो एटा को आज हमें इंप्लिकेशन नहीं परिबा. जेमति कि प्रोग्राम हम जेमति वीडियो कैसेट हला कंप्यूटर फील्ड स्ट्रिप एगुडा को हमें पिला को दे परिबा जोटा कि सेमान को एडिशनल मटेरियल हिसाब रे यूज करि परिबे. सेमाने निज ओन पेस रे निजे मूव करिवे. तो डिस्टेंस लर्नर माने भी मध्ये सेम जिंस करि पारंती. ठीक अछि सेमान निज पेस रे जिबे. एगुडा को सबुतक गोटे हम लॉजिकल सीक्वेंस रे प्रेजेंट करिबा जेमति कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हला तांकु सेतरे रिइंफोर्समेंट रे भी सुविधा देबे. प्रत्येक यूनिट पर जेमति सेमान निजे सेल्फ डायरेक्टेड रिइंफोर्समेंट पांती. तो एगुडा को सबुतक हम बिहेवियरिज्म थ्योरी रो इंप्लिकेशन हमें रखि पारिबा. देन आस्थिला हमर कोन द कॉग्निटिव अप्रोच. जेतला हमें कॉग्निटिव अप्रोच कथा कहिथिला हमें कोन कहिथिला हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कथा कहिथिले. एथरा हमें कोन कहिथिले कि नाइ तमे थिंकिंग प्रोसेस आसीबो एंड हमें ब्रूनर कर
डिस्कवरी लर्निंग एथर नैथिले जोथरे कि मेनली से क्यूरियोसिटी कथा कहिथिले सो जेतेला हम प्राइमरी एम्फासिस ताले डिस्टेंस लर्निंग हम कोन देबा ना सेल्फ लर्निंग जेंति कि डिस्कवरी लर्निंग कथा हम कहूचे तो सेल्फ डिस्कवरी सेतरे आछे व्हेन जेतेला तुम क्यूरियस रहउछो तुम जानिया को चेष्टा करूछो तो कॉग्निटिव अप्रोच रा हम कोन करि परिबा ना हां कि जदि हमर सेल्फ लर्निंग रखि परिबा तापर कोन रखि परिबा यू विल ट्राई टू डिस्कवरी जो थे कि तुम सेल्फ रिवार्ड मध्य दबो तो बेसिकली हमर जदि हम एजुकेशनल इम्प्लिकेशन देखिबा ब्रूनर कोन कहछन्ती ना हमें वी आर ट्राई टू डेवलपिंग इन द लर्नर ए प्री डिस्पोजिशन टुवर्ड्स लर्निंग बाय स्पेसिफाइंग एक्सपीरियंस देन हमें कोन करि परिया वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाइंग इंफॉर्मेशन फॉर द लर्नर टू जनरेट न्यू प्रोपोजिशन then third रे हमें कोन करि परिबा we will try to specify the most effective sequence in which to present the material then fourth रे हमें कोन करि परिबा जोटे कि मु तुमको बुझ सेते बेले भी कहितली extrinsic and intrinsic reinforcement हमें देई परिबा ओके नेक्स्ट आसुची हमर कम्युनिकेशन थ्योरी जोटे कि जस्ट हमें डिस्कशन करले कम्युनिकेशन थ्योरीज रे हमें तीनटा थ्योरी कथा पढिथिले गोटे होची मैथमेटिकल थ्योरी रे भी हमें जस्ट कहले कोन जदी किछि इरेलेवेंट हमें जिंस रहउची किंबा हमें किछि जिंस डिस्कशन करूछे हमें देखिबा कि नाही से पर्टिकुलर कम्युनिकेशन थ्योरी रे केते कि जे कोन से तमे सपोज किछि भी फेस टू फेस न होय कि तमे YouTube रे हो किंबा वीडियो मेसेजेस देलो हमें ट्राई करबा कि पिला पाखरे सेतिके जिंस बा सेतिके कम्युनिकेशन रे सेटा पहुंचो फास्ट हमें पहुंचेबा information theory रे हमें कोन करबा we'll try to transmit it we try to encoding it and we try to get the feedback from the receiver जोटे कि गोटे जिंस ऐड करले then free pass आउ सोशल रेस्पॉन्स थ्योरी रे हमें कोन करि परिबा ना एठी हमें जेमति के कहले कोन ना टीचर्स आर फ्री स्टूडेंट्स आर फ्री से पर्यंत फ्री टू शेयर देयर एक्सपीरियंस जे पर्यंत दे आर नॉट गोइंग टू हर्ट ईच अदर जदि सेमाने जणे जण को हमको हमपर करिबा भलिया किछि जिंस कहउछन्ते बा हमको हमपर करूछन्ते तो सेमति किछि कम्युनिकेशन न हबाटा बेटर एंड एटा को हम कोन करिया जले फ्री फ्रेस रे हम ट्राई करिबा देयर शुड बी ए कोरियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर देन आसीबा थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन को जो थे कि हमर इथरे हमर कोन कोर्स डिजाइन केमिति हमें करि परिबा तो फर्स्ट हमें देखिबा कि गोटे क्लासरूम रे जने ट्रेन टीचर केमिति तमे जो लर्निंग मटेरियल टा को लेखिबा को जिवो तो तमे जो देखिथिबो जेतेबेले तमे इग्नू मटेरियल देखुछे तर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स लेखा जाउछे तो फर्स्ट हमें ट्राई करबा कि जदी मो लर्न मटेरियल टा पिला मानन को दउची ताहले से माने केमिति माने मोर ऑब्जेक्टिव्स रहबो कि नै जाने पढंतु बोली किबा मु सेमानकर मु एतक जिंस पढि सरला परे किबा पढि सरला परे मोर ऑब्जेक्टिव रहबो से माने एआई जिंस सिखिबे तो सेति पई किछटा एक्टिविटीज रहिছে फर्स्ट होची प्रेजेंटिंग द मटेरियल in what way I'm going to presenting my material तो या विषय हमें डिटेलिंग रे डिस्कशन करिबा तापर आसी आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ता विषय भी हमें जदि हम सिलेबस हो किछ टेस्ट माने किछ टेस्ट रिलेटेड जिंस हो ता हम एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स रखिबा जोटा कि एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट और कोर्स मते ए ऑब्जेक्टिव फुलफिल करियार अछि then throughout the material जेतक भी हमें डिस्टेंस कोर्स पर डिजाइन करिबा throughout the material हमें ट्राई करिबा we will try to motivate the learner then हमें ट्राई करिया we will try to exploiting learners experience जेमति कि जने जेतले एज ए टीचर जेतले किछि लर्निंग मटेरियल डिजाइन करबा को जाउची तो मु एमति भाबरे लिखबी जेमति कि स्टूडेंट तार लर्निंग एक्सपीरियंस को बा लर्नर तार एक्सपीरियंस को सेतरे एक्सप्लोइट कर परथो we will try to provide learning activities we will try to facilitate retention एपरे डिटेलिंग रे हमें आगु को पढिया को जिबा we will try to promote transfer of learning जो थे कि सपोज मु मिसाण से गोटे पिला ऑलरेडी मिसाण सिखि करे आछि मोटे गुणन देछि सो दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स कैन लर्न मल्टीप्लिकेशन बाय द हेल्प ऑफ एडिशन एटा विषय भी डिस्कशन करिबा देन प्रोवाइडिंग ओकेजन फॉर फीडबैक जंदी फीडबैक पे भी हमें प्रॉपर सेठी हमें चैनल बा मींस देथिबा
then providing guidance in various ways केमिति हमें guidance provide करिबा तो starting करिबा कोठो ना presenting the materials रो तो जेतले हम presenting the materials कथा कहूचे तो first आसीबा हमर कोन intellectual clarity so मु जो टॉपिक ऊपर मोर मटेरियल बनेबा को जाउचे फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू हैव mastery over that particular subject or content or theme or sub theme if I'm unable to know or if I don't know that particular content or subject or that theme then I may not be able to write that particular material right तो मते फर्स्ट कौन करिया पड़े मते किछ गोटे कोर्स डिजाइन करबा पूर्व बा कोर्स मटेरियल को लिखिबा पूर्व मते फर्स्ट इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी रखिया को पड़िबो देन जेतले मु प्रेजेंट करिया को जाउची मटेरियल लिंग्विस्टिक सिंपलिसिटी मेंटेन करिया पड़े सपोज आई एम गोइंग टू यूज so many ambiguous or bombastic जदि हमें कोई पर वर्ड भी सपोज मु कहबी ameliorate you are ameliorate so एमती किछ वर्ड मु रखिबिनी those words may be or may not be unable to or able to understand by the students तभी से मैंने बुझी न पारिबे जदि मु एमती किछ वर्ड यूज करबी थ्रू आउट माय मटेरियल तले से तो बारंबार जाइके डिक्शनरी चेक करथिबे ना तो सेथि पय कोन कहउछन्ती जो लिंग्विस्टिक सिंपलिसिटी रे हमें ट्राई करबा जेहेतु से माने सेल्फ लर्निंग करिवे तो सिंपल एवरीडे लैंग्वेज हम यूज करबा जेतेले मु एक्सप्रेस करिबी सिंपलिसिटी रे एक्सप्रेस करिबी सिंपल सेंटेंस रखिबी आइडिया गुडा को कांसेप्ट को क्लियरली एंड गोटे आम कह अडॉप्टिंग ए पर्सनलाइज स्टाइल जोटा कि तुमको लगे जमी तुम निजे लिखिच गोटे टची माने इमोशनल टची फिलिंग आस ना बढ़िया लगुच पढ़ी बुझी पारुचे से वाला लैंग्वेज में यूज करेंगे देन आउ कौन ट्राई करेंगे ना आई विल ट्राई टू कंक्रीटाइजेशन कौन मु किसी एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट रखिबिनी जेमति कि पिला इमेजिनेशन वर्ल्ड रे बुलुथिबो कि एटा केमिति हेइथिबो सेटा देखिबा पे सेथि पय मु कोन करिवि सपोज किछि गोटे कांसेप्ट अछि जोटा कि तुमको एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड को नउछि इन दैट केस आई विल ट्राई टू पुट illustration diagram any picture or I will try to clarify that particular word ओके कि जदि ए वर्ड अछि ताको मु ट्राई करबी किबा सेठी किछि पिक्चर किबा डायग्राम देई पारिबे देन कोन एप्रोप्रिएट मीडिया सपोज मु कोड लर्निंग मटेरियल दा कोड आनिछि कोड रिट्राइव करिछि मु रिसोर्स ता भीतर कोन लगेछि तो से मटेरियल दा कोड अछि डिस्कशन करबी ता ऊपर प्रॉपर्ली मु माने जो जहां भी किछि लर्न मटेरियल अछि सेटा केमिति रहिला तार एफिशिएंसी सफिशिएंसी कौन से डिस्कशन रहिबो से पर्टिकुलर सेक्शन पूरा तापे सॉरी पर्टिकुलर तमर से कांसेप्ट को मु डिस्कशन करबी नै मु ए थ्रू रो ए मटेरियल रो ए जिंसो आनिची बा रिसोर्सेस मोर एआईआर तो सेठी पे कोन मु एप्रोप्रिएट मीडिया भी सेठी मेंशन करबी देन आसीबो हमर कोन ना आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव इके पूर्वरु हमें कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर कथा पढिथिले जेमति कि मु कहली जे तमरो नॉलेज अछि ताले तुम यू आर एबल टू हमें को वर्ड यूज करबा स्टेट नेम एगुडा को ए वर्ड सब हम यूज करबा त कॉग्निटिव डोमेन रे तो मु ट्राई करबी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रखिया पे तमन जदी केबे एजुकेशन रे जदी केबे टीचिंग देबा को जाइछ किबा बीएड करछ देखिथिबो आजिका डेट रे हम जदी कहबा कि सपोज तमे लाभ किसी पढ़ौछ मैथमेटिक्स रे किबा किछ गोटे इंग्लिश रे किछ गोटे प्रोज पढ़ौछ तो तार लिखुछ द स्टूडेंट विल एबल टू नो द पर्टिकुलर थिंग सो नो माने पिलाटा तमे जानिला बोली जानिबो किमिति when the student will able to what na express when the student will able to say when the student will able to write their particular thing तो सेटा को हमें कौन कहूचे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कथा कहूचे तो सेठी हमें कौन करि परिबा ना फर्स्ट हमें ट्राई करिबा कि पिलाटी जहां भी किछ ऑब्जेक्टिव्स अछि ताको हमें इंस्ट्रक्शनल वे रे बा बिहेवियरल वे रे लिखिबा जदरे कि पिला सिंपल वे रे ताको एक्सप्रेस करि परथो नै पिला जानिछि बोली मु जानिली देन आछि कोन हमरो सपोज हमरो से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रे हमरो कि किछि भी रेक्टेंगुलर हला किछि भी
कौन आम कौचे ना यहाँ तुम सल्व कर तो सेम जिन एगेन कहीदे तुम जेकोसी सब्जेक्ट नुहे ट्राए कर बिहेवियरल फॉर्म लिखापी तो जदि तुम मैथमेटिक्स नौ तुम देखि लिखिथे पिला माने एटा जानबे से जानबे बोली तुम के जान पिला माने बुझे बुझे बोली तुम के जान तो सेठी कौन यूज करेंगे ना छात्र छात्री मैंने वर्णना करेंगे छात्र छात्री मैंने कहे तो यही टाइप वर्ड आम यूज करवा देन आमर कौन मोटिवेटिंग द लर्नर तो मोटिवेटिंग द लर्नर आम जोड़े जिन गोटे हूँ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आउ गोटे हूँ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन आसुची कि जमती कि जस्ट आउ टिके पूर्व आम कहते कि जदि से माने बहिर कभर पेज देखिकी साइज देखिकी तार फॉर्मेट देखिकी तार लैंग्वेज स्टाइल देखिकी तार पिक्चर देखिकी जब अट्राक्टेड होती आम एक्सटर्नल कैरेक्टर कहवा इंटरनल फीचर आम कौन करवा वी विल ट्राई टू फुलफिल द नीड ऑफ द लर्नर सपोज तुम किसी मटेरियल खोजुच कि जिन जानवा चाहूच एंड सेटा ही ना से भितर इट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल योर नीड सेमती जब आम कहे आउ कौन इंटरनल फैक्टर रहा विल ट्राई टू एक्सप्लोर द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर कि जमती कि ऑलरेडी आम यहाँ कही कि जो तुम से मटेरियल पढ़ुव यू विल ट्राई टू connect it with your experience connect it through your previous knowledge सेटा को आमे कहि करू exploring the previous experience then आमे कोन कहूचे we will try to use a personalized style in presenting information जेमति कि तुमको जस्ट आउ टिके पूर्व कहितली कि आमे ट्राई करबा कोन नै को पढिले गोटे इमोशनल कनेक्शन बा तमर कनेक्शन बढ़ियो ना एटा भलो लागुची मु पढिबा को जाउची इट कैन बी इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉयबल जोटा कि तुमको अम्पल नंबर ऑफ फीडबैक प्रोवाइड करूथबो कि तुम एवरी स्टेज रे निजको फीडबैक दोथबो जोथि कि असाइनमेंट थिबो डिफिकल्टी लेवल हमर कम माने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जेमति हमर हो जे सेमति रहइबो एंड विल ट्राई टू स्टडी द यूनिट्स इन ए मॉडरेट लेंथ बेसी अधिक लेंथ हे नथि नेक्स्ट आछी कोन हमर एक्सप्लोइटिंग लर्नर्स एक्सपीरियंस कोन जोटा तुम ऑलरेडी जानिछो जेमति कि हमें कहूचे सेतरा हमें कोन रखि परिबा ना स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट जेतले मु डिजाइन करिवि कोर्स यूनिट को मु ट्राई कोन करिवि आई विल ट्राई टू स्टार्ट विथ द मटेरियल और इन्फॉर्मेशन व्हिच इज ऑलरेडी नोन बाय द लर्नर जदि मु स्टार्टिंग रे एमिति किछि माने मटेरियल रखिवि जोटा कि तुम किछि बुझी पारिबोनी तारे किछि बुझा पड़नी चलो मु पढिबि कि जदि मु एमिति किछि मटेरियल रखिवि जोटा तुम ऑलरेडी जानिछो सेटा बुझा पडुची सेते में हमें कोन करबा हमें नोन जोटा जानिथिबो पिला सेटा हमें स्टार्टिंग रू रखिबा तापर हमें कोन करि पारे जेंति कि मु ऑलरेडी हमें जस्ट कहिचे कि हमें पर्सनलाइज्ड लैंग्वेज यूज करबा फॉर्मल लैंग्वेज माने जेते माने एते भी स्ट्रांगली फॉर्मल लैंग्वेज यूज करबानी ट्राई करबा टिके इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करबा पई देन सबु तक जते बेले भी हमें यूनिट बा किछि ओटे हमर सब थीम हमर आसुची ताको नंबरिंग करबा पई हमें चेष्टा करबा तापर आछी सोर्स फॉर द चॉइस ऑफ एक्सपीरियंस जोते कि हमर कोठ हमर सोर्स हमें कोठ से एक्सपीरियंस गुडा पाइबा तो सिंपल होची कोन नेचुरल फिनोमेना फॉर सब्जेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन लाइक हमर साइंस एला ज्योग्राफी एला किछि भी जिंसर डिसिप्लिन सेथुर हमें पाइ परिबा जेमति कि तमे माने निजर सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स रहला एवरीडे अफेयर रहला फोकटेल तमे ऑलरेडी जानिछो किछि लिटरेचर हिस्ट्री रहला मास मीडिया जेंति हम टीवी रु किछि जिंस जानचे सेथुर हमें एक्सपीरियंस पाइ परिबा देन आछी हमर नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्टिविटीज ओके तमे यदि किछि हमें लर्निंग मटेरियल डिजाइन करूछे ताले सबुटर मेन जिंस हो जे हमें कहितले कोन लर्निंग बाय डूइंग तो हमें बेस्ड लर्निंग सेते बेले पर व्हेन विल डू समथिंग सेति पे हमें कोन करि पर वी ट्राई टू गिव सो मेनी एक्सरसाइजेस टू द लर्नर जेते कि से एक्टिविटी हिसाब रे करि परिबो जेमति कि विल ट्राई टू गिव देम एक्सरसाइज लाइक ड्रॉ कंक्लूजन या भीतर कोन तमे जानिलो तमे निजे कोन बुझलो गोटे डायग्राम टे शो करो कांसेप्ट मैप करो किबा निज निज भीतर हमर गोटे गेम करि परिबा ठीक अछि देन आमे कोन करि परिबा वी विल ट्राई टू वर्क ऑन यूजफुल मटेरियल्स जेमति कि बुक हैला पेपर हैला फोकलोर हैला सेगुडा का हमें एडिशनल मटेरियल बा रेफरेंस हिसाब रे दे परिबा तापर तांको कहि परिबे कि वी विल ट्राई टू गिव देम एडवाइस टू गो ऑन ए स्टडी विजिट और कलेक्ट इंफॉर्मेशन we can also say that conduct experiment we can give them assignment also जेमति कि हमरो इग्नोर मध्ये हमरो असाइनमेंट दिया जाउची जोथि कि हमरो ओपन एंडेड क्वेश्चन रहउची मल्टीपल चॉइस रहउची प्रोजेक्ट दिया जाउची या व्यतीत भी आमे किछि अदर एक्टिविटीज देई पारिबा
नेक्स्ट आसुचे हमर कोन फैसिलिटेटिंग रिटेंशन जो थे कि हमको फर्स्ट हमको कोन करिया परे एक्वायर्ड करिपा को नॉलेज पड़िबो एंड रिटेंशन पई सेटा को रिपीटेशन करिया पड़िबो हम जदी देखिथिबो हम यूनिट 1 रे जस्ट एबे बिहेवियरिज्म कॉग्निटिविज्म और कॉग्निटिव अप्रोच विषय पढिले एंड यूनिट 3 रे मध्ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरी बा बिहेवियरिज्म आउ कॉग्निटिव अप्रोच ऊपर हमर किछि कुआ गला तो सेति पई हम कोन करि परिबा जिते आम फैसिलिटेटिंग रिटेंशन कथा कौचे तो आम गोटे पर्टिकुलर मटेरियल को बारंबार रिपीटेशन आम कर सो दैट व्हेन द चाइल्ड विल गो थ्रू द सेल्फ लर्निंग he will try to recall it or he will try to summarize it or he will try to question about that particular concept okay then आउ कोन करि पारे रिटेंशन पे we will try to deeper the understanding of the students and we can try to get the abstract what is already learned by the students then thirdly we can give additionally hame kon kari pariba na hame problem solving approach adopt kari pariba for the retention then next one is promoting transfer of learning so jeta hame transfer of learning katha कहूचे simply कोन आमे फर्स्ट आमे जनरलाइजेशन करबा जोथि पे हमको दरकार कोन परबा विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज और पैरेलल कोटा कोटा सिमिलर जिंस अछि बा विल ट्राई टू एक्सरसाइज इन पॉइंटिंग आउट द पैरेलल्स इन अ गिवन ग्रुप सिचुएशन और आइटम और इश्यूज जहां भी किछ थेबो विल ट्राई टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द सिमिलरिटीज देन we will try to exercise in providing examples हमें किसी दे परिबा we will try to illustration of parallel things situation phenomena or consequences then we will try to exercise in looking parallel by identifying forward or backward references then हमें कौन कर परिबा जेतले हम सिमिलरिटी देख सारले तापर हमें we will try to find out the dissimilarities then third one is we will try to apply the knowledge for applying the knowledge in a different field जेमति कि सपोज मु गोटे जेतले ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कथा कहूची मु गोटे कोन सिचुएशन रो सपोज जेमति कि मु कहले आई नो हाउ टू राइड ए बाइसाइकल then that learning of riding a bicycle must be helpful in riding a scooty also तो सेटा केमति मु मोर नॉलेज टा को प्रैक्टिकल फील्ड रे अप्लाई करछि जेमति कि मु कहले आई नो हाउ टू डू एडिशन then now I will try to apply the addition in doing multiplication simple so kimba I will know how to do subtraction तो ताकू मु सबट्रैक्शन जदि जानिछि ताले मु ताकू कोथरे यूज करबे डिवीजन रे यूज करबे देन नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग फीडबैक तो जदि हम फीडबैक कथा कहूचे दैट आर टू वे फीडबैक जेमते कि मु कहली कोन कि सपोज किछि ओरे करेक्टनेस करबा पई किछि ओरे रिवीजन करबा मॉडिफिकेशन करबा पई हमको नियत फीडबैक दरकार सो फर्स्ट होछ कोन हमर कहबा जेतला हम फीडबैक कथा कहूचे आमे कहले एटा गोटे सेल्फ लर्निंग मटेरियल हमको टू वे फीडबैक दबो ठीक अछि फर्स्ट होछ स्ट्रक्चर रे हम कोन कि हम स्मॉल स्टेप्स रे जाउचे हम किछि ओटे जिंस सिखुचे दैट मे बी हम निजे को सेल्फ चेक करि परिबा निजे को क्वेश्चन करि परिबा निजे को फीडबैक दे परिबा नहले जेतला हमर गोटे आसुचे लेट सम ऑफ सेक्शन रे हम सेठी कोन करि परिबा हम समराइज करूचे स्कीमेटिक डायग्राम दोचे स्कीमेटिक क्वेश्चन हमें दोचे सेगुडा दे परिया नले थर्ड रे हमें कोन करबे तांको असाइनमेंट दे परिबा देन लास्ट वन इज योर प्रोवाइडिंग गाइडेंस हमें कोन करूचे ना जेमति कि तुमको कोआ जाउचे एटार एई जगह को जाओ देखिबो किबा ए पॉइंट रो ए पॉइंट को जाई कि तुम देखि परिबो तो किछटा सबसेक्शन दोचे नहले हमें तुमको गाइडेंस रे हमर रेफरेंस सेक्शन रो रेफरेंस दोचे कि यू कैन गो थ्रू ऑल दिस मटेरियल्स जदी तुमको एटा कम पडुची तले सजेस्टिव मटेरियल्स तुम नै परिबो then हमें कौन करूचे now we can give you the additional information about the particular thing so last one is conclusion जते बेले हमर पूरा मटेरियल टा सरुची बा हमें डिजाइन करू दोचे गोटे कंक्लूजन पार्ट लिखिया निहा जाबे दरकार कि तमे कल्लो कोन कि जेतले हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप करिबा किबा जेतले हमें पूरा कोर्स थ्रू जाउचे तो मु थ्रू आउट द ईयर हमें एई विषय रे डिस्कशन करले किबा आगु को एई विषय रे हमर डिस्कशन करिबा सो कंक्लूजन इज ए मस्ट तो एतक सबुतक स्टेप हमें फॉलो करिबा जोथरे कि जे तमे देखिबो तमे सब थीम रखिबो सेते किछि इंफॉर्मेशन दबो सेल्फ चेक एक्सरसाइज दबो ताको डिस्कशन करिवो डिस्कशन कर साला पर रिवीजन करेबो रिवीजन करे साला पर ताको इलस्ट्रेट करेबो किछि एक्टिविटी देलो समरी लिखिलो ग्लोसरी रखिलो देन आंसर टू सेल्फ चेक क्वेश्चन एतक तमे दे परिबो ओके तो एमती किछि डिजाइन अछि जोते कि तमे स्ट्रक्चर अनुसार हमें दे परिबा बा से अनुसार हमें
डेभलप करें देन आसुचे हमर प्रिंसिपल ऑफ मीडिया सिलेक्शन जस्ट मु कहितले कि मीडिया बा को हम रिसोर्सेस रो आणुचे डिस्टेंस लर्निंग रे एटा ओटे इंपोर्टेंट फैक्टर तो डिस्टेंस लर्निंग जेतला आमे कहूचे तमरो जानिथिबो किछिटा तमरो कोर्स आसे बा तमरो रेडियो रे प्रोग्राम आसे जोटा कि इग्नोर सपोज एई पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर डिस्कशन हबा को जाउची कि टेलीविजन रे आसीबो कि एई पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर आज तमरो डिस्कशन हबो सो मीडिया रे हमरो टेलीविजन रेडियो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग प्रिंट फिल्म स्ट्रिप सॉफ्टवेयर एगुडा को सबुतक हमरो मीडिया रे जाउची तो इन शॉर्ट हमरो प्रिंट मटेरियल व्यतीत आमे आउ जे कोनसे मटेरियल यूज करूचे बा तमे जो नॉन प्रिंट मटेरियल आमे जहा को कहूचे किबा मीडिया जहा को कहूचे से सबुतक हमरो आसुचे तो क्वेश्चन होची कोन जेतला आमे फैक्टर रखुचे तो एगुडा केमिति आमे यूज कर परिबा तो इट मस्ट बी एक्सेसिबल जदि मते रेडियोटा अछि तो रेडियो मस्ट बी एक्सेसिबल कंप्यूटर मस्ट बी एक्सेसिबल किबा टेलीविजन मस्ट बी एक्सेसिबल कि एटा मो एक्सेस करि परिबो स्टूडेंट एटा एक्सेस करि पाउचे अदर देन प्रिंट मटेरियल नहले कोन इट मस्ट बी कन्वीनियंस और यूजेबिलिटी थिबो सपोज किछि गोटे तमे यूज करिया जाउछ तमे किछि बुझी पाउना किबा सेटा यूजेबिलिटी नाही तो जोटा भी तमे नॉन प्रिंट मटेरियल यूज करिवो दैट मस्ट बी यूजेबल एंड आउट मींस कहउछंती कि कंट्रोल ओवर द मीडिया टेक्नोलॉजी बाय द लर्नर एज वेल एज द टीचर कोन तमे पढिया को जाउछ सपोज तमे किछि गोटे जिंस सिखिया को जाउछ किबा आमे पिला मानु को दे दोछ से मानु को नै आमे पढिबो किंतु दैट मस्ट बी पढा बदल आउ किछि किछि जिंस करूछंती सो एटा कंट्रोल रहबा दरकार बोथ टीचर एंड स्टूडेंट मानको पाखरे तापरे कोन एटा हमरो तार कॉस्ट इफेक्टिव हेता दरकार एंड सिक्वेंशियली रहबा दरकार देन से कहउछंती जेतेबेले आमे तांको नॉन प्रिंट मटेरियल बा मीडिया आमे दउचे सेटा एजुकेशनल फीडबैक रहथिबा दरकार तार तार सुइटेबिलिटी रहथिबा दरकार एंड जेतेबेले भी आमे सपोज मु गोटे पर्सन को रिसोर्स पर्सन को ने हायर करिवे जाको मो अफोर्ड ही करि पनोथिबे सो एमती रिसोर्स पर्सन को मो अफोर्ड करिया को जिबे सो इट मस्ट बी कॉस्ट बेनिफिट हेतिबा दरकार बा सेतिके कॉस्टली हे नथिबा दरकार सो दिस इज ऑल अबाउट योर theories learning theories जोटा कि हमर फैक्टर्स जोटा कि हमर कोर्स डिजाइन बा इम्प्लिकेशन ऑफ theories फॉर कोर्स डिजाइन जोटा कि डिटेलिंग रे तमर केमिति मटेरियल प्रेजेंट करिवो केमिति आइडेंटिफाई करिवो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हाउ टू मोटिवेट योर चिल्ड्रन लर्नर how to exploit the learner's experience you will provide the learning activities you will try to facilitate retention you will promote transfer of learning you will try to provide feedback then you will try to provide guidance to the students and lastly you will add a conclusion okay that's it through this you can develop a course design that's it thank you जब कार किसी क्वेश्चन अच्छे वर्तमान तुम पचारि पारो do you have any question you can ask now ପିଲାମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି or we'll wind up in next class we'll discuss about block 2 so if you have any question regarding block 1 you can ask me now if you don't have any question then just write that you have already understand the learn material किछि भी लिखि दियो ताले हम क्लास ओवर करिबा okay it means you don't have any doubt okay sir आपण अछंती सर क्लास ओवर करिबा
Okay, thank you, students. We'll over the class now.